Good day, folks. This is Bob from BBD reporting live from the studio. Right. So here we have it. What do we have today? I just want a little quick readout of what's editorials of in the Indian Express. One is beyond barricades. Farmers have won. Government shouldn't see this as defeat, but a learning. Farms need reforms via conversion, not confrontation. Absolutely right. Wealth of nations. Rising income inequality is cause of concern. Increasing GDP pie, enabling access to education, healthcare can help resolve issues. So what does General Huda write? General Rawat's legacy. CDS bought energy, purpose, military reform, service chiefs, a successor must take forward this work. Service-specific planning also created another operational deficiency. Then we have this by PDT Achari, a worrying suspension. Action against 12 MPs relies on a broad interpretation of parliamentary rules. The judiciary has time and again clarified that the House has absolute powers to regulate its internal matters. Suspension of a member is such a matter. The judiciary will intervene only when a patently unconstitutional act is done by the House. Nevertheless, resorting to a doubtful procedure to suspend MPs for an entire session will continue to bother democratically minded citizens at subconscious level. It absolutely does. And what does Patricia Mukhim write? End the impunity. The Northeast is not only less understood by distant Delhi, but also considered alien to the nation. But the people of Nagaland deserve neither AFSPA nor militant gun culture. Then what we have NV Ramana write? No country for ivory towers. Students, young lawyers must realize they are an integral part of a larger society and responsible to it. Lawyers too. Majority in jail. This is Christopher Jaffarlaw and Monica Saini. Says majority in jail. Minorities are overrepresented amongst under trials, convicts in most cases. And the same, it is obviously the same case for the blacks in the United States, right? And same thing here, folks. Cheers. स्थिति यह है कि जब लोकसभा में अखिलेश और मायावती अलग अलग हुए तो मायावती ने अपनी चित परिचित शैली में अखिलेश पर हमला बोल दिया। उनके परिवार पर क्या क्या नहीं कहा। सभी को लगता था कि अखिलेश खामोश क्यों है। लोग कहते थे अखिलेश डर गए हैं। लेकिन बड़ा नेता क्या होता है और चतुर नेता क्या होता है, ये शायद अखिलेश यादव से सीखना चाहिए और शायद अखिलेश यादव ने अपने पिता से सीखा। उस दौर में जब लोग कह रहे थे कि अखिलेश बोल नहीं रहे, अखिलेश ने एक बार भी मायावती पर हमला नहीं किया। और आज दलितों का बहुत बड़ा वोट अखिलेश पे शिफ्ट हो रहा है। कह रहा है कि जिस समय गठबंधन बना था मायावती को ने तो इन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और मायावती तो बीजेपी के गेम में फंस गई। मायावती का वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर से वो हिस्सा दलितों का, वो हिस्सा जिसमें मायावती अधिकार बनाती थी, वो भी मायावती से टूट रहा है इस चुनावों में। कोई कल्पना कर सकता था कि विधानसभा चुनाव में लोग इस बात पे आकलन करेंगे कि 10 सीटें आएंगी नहीं आएंगी? क्या प्लान है मायावती का? क्या बीजेपी के साथ चुनाव से पहले अलायंस करेंगी, चुनाव के बाद सपोर्ट करेंगी, या कोई और प्लान है? हम बारीकी से निगाह रखेंगे बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट पे। हमने अपनी टीमों से कहा है गांव में जाएं तो दलितों से बातचीत करें कि दलितों की इतनी बड़ी नेता का इस तरह मोहभंग दलितों से क्यों हुआ है, लोग उनको दलितों की जगह दौलत की देवी क्यों कहने लगे थे और कैसे बदलाव आया मायावती का। ये हम दलित चिंतकों से, दलित लेखकों से और दलित बस्तियों में जाकर जरूर मालूम करेंगे और बताएंगे। So the farmers have got the letter from the government. They are dismantling on the way back, but have they forgotten? Your guess is as good as mine. My guess is they've not forgotten. They will not forgotten. They will not forget. And what about the timings? Is polls in Punjab and UP timing is key. SKM protests to mark Vijay Divas. December 11th review government's effort on Jan 15th. It's not gone away. And is the timing right? I think it was too late. If this had happened a couple of months ago, before Jayant Chaudhary's tied up with Samajwadi Party, before what happened in Lakhimpur Kheri, there could have been a chance that the BJP would have got back into the game. I think they're toast because what you've got is a lost confidence and lost faith. At Tikri protest side, 379 days that brought farmers from 2 states closer. Not only this is not the key. Farmers from 2 states is not what the concern of the government is. What it did was it brought we are one family, which means forget the states, all the jatis and all the religions under the ambit of the farmer, which is where this government lost the plot. And that's why they repeat laws. Repeated farmers end protest after letter from government called historic win. Farmers call of year-long stir to leave city borders from Saturday, maybe back if centre doesn't fulfill promises. Chances of them fulfilling promises are minuscule because as soon as the date is announced, guys,
for the election code. They're going to use that as a cover. What, mark my words, at Singhu, fight will continue. Don't feel like going back. Days that turned into a year, farmers at Singhu border dismantled protest. Farmer unions say will review progress of promises by government. Demand for legally guaranteed MSP could put fiscal strain, as experts want. But here is what I want to say. It has to be targeted MSP. Now, for example, in Punjab and Haryana, I would say MSP for wheat must stay. But rice, on the other hand, could be thought about. Here, then we have this. Protest is over. All eyes now on impact on political arena. He says a turning point came when 4 farmers returning from protest died when a car owned by son of a union minister recklessly plowed into them in Uttar Pradesh. Political watchers said the rear climbed down on the power of the Modi government reflected the ruling Bharatiya Janata Party's anxiety to regain support among farmers, an influential voting bloc in Uttar Pradesh, the country's bellwether state when it goes to polls early next year. However, right-wing organizations affiliated to the BJP did not succeed in the strategy of creating a religious divide among farmers in western UP, and the tactics of labeling farmers as anti-nationals flop, said Sudhir Panwar, a political science teacher in Lucknow University. Farmers also boycotted BJP leaders in Haryana and Punjab and frequently prevented them from visiting their constituencies. So the political situation in both western and eastern UP was proving to be difficult for the BJP, Panwar said, and hence is what had happened. BJP MP pitches places for worship, acts, repeals, fan rows. This is UP, 79% of Beti Bachao funds spent on media advocacy. That's all they do, spend it all on media. Nothing on the ground. So all their fat cat medias, and that's why you have Godi media, folks. All this government does is advertisement, advertisement, advertisement. That's it. Cheers. 109 सीटें जो थी वो उनका गढ़ नहीं था। 109 सीटें जो आई थी वो डबल इंजन का विकास, गुजरात का मॉडल, नरेंद्र मोदी का चेहरा, देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, परिवारवाद से मुक्ति, गुंडाइज्म से मुक्ति, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, किसानों का भुगतान होगा। यदि लिस्ट गिनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तमाम चीजें देखने के बाद लोगों को लगा कि एक बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी को देखा जाए कि वो क्या करती, और जितना बोला उसमें से 20% भी बीजेपी करती तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती कि आपको एक जिले पे दो जिले पे एक केंद्रीय मंत्री रखना पड़े, आपको पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम योजनाएं करनी पड़े, तमाम बाकी राज्यों से लोग बुलाने पड़े, लाखों की तादाद में आपको लोगों को झोंकना होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री की लगातार रैलीज हो रही है उत्तर प्रदेश में। कितनी बार प्रधानमंत्री आए और कितनी बार आएंगे अभी पता नहीं। लगातार प्रधानमंत्री कभी प्लेन से रोड पे उतरते, कभी हर चीज में बात करते, और मुख्यमंत्री को जब रोड से पीछे दौड़ाया तो उनको फिर फोटोशूट करना पड़ा लिपापोती के लिए कि भैया नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, हम इनके साथ है और ये बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। ये जो बार बार नरेशन, करोड़ों रुपए की विज्ञापन छपने पड़ रहे हैं, ये बातें इसलिए हो रही है कि जो बातें कही थी वो यथार्थ के धरातल पे नहीं उतरी, इसलिए लोग नाराज है। तो फिर लोगों को लगता है कि अखिलेश के राज में बुरा क्या था, अखिलेश ने भी तो अच्छा काम किया था, लेकिन उससे भी अच्छा काम कोई करेगा, इसलिए बीजेपी को सत्ता में लाया था। कहीं योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने नहीं था। ये मठाधीश आके यहाँ मठ स्थापित करेंगे लखनऊ में, ये भी किसी को पता नहीं था। सबको लग रहा था कि कोई अच्छा एक प्रोफेशनल आदमी लाएगा, जैसा मोदी जी हमेशा अच्छे लोगों को लाते हैं, या जो अध्यक्ष थे आर्य साहब, शायद उनको प्रमोशन मिल जाएगा। पिछड़ों को भी लग रहा था कि चलो हमारे में से कोई बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में राज चला है, दलितों का उत्पीड़न हुआ है, किसानों के ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। अभी मैं बता रहा था कि जो नीति आयोग के जो आंकड़े सामने आए कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सर्वे अभी पहली बार उन्होंने किया, 12 पॉइंट्स के ऊपर सर्वे किया, और उसमें जो बाहर आए रिजल्ट वो शॉकिंग है। बिहार सबसे गरीब, उसके बाद झारखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश। 40% उत्तर प्रदेश की जनता गरीब है, ये नीति आयोग कहता है, सरकार के आंकड़े। उसके बाद जो 12 अलग अलग पैमाने थे, जिस पैमानों में बिजली का उपलब्धि, बच्चों का स्कूल जाना, स्कूल की उपलब्धि, बच्चा कितना समय तक स्कूल लगते हैं उसका एक बैरोमीटर था। प्रसव के पहले महिलाओं को कितना पोषित आहार दिया जाता है, कुपोषण के कितने मामले हैं, ये तमाम हर पैरामीटर में पहले 5 में यूपी है और ज्यादातर में पहले 3 में यूपी है। यदि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, इतने करोड़ों लोगों के घर में आज भी अनाज जा रहा है, और कोविड ऐसा ही है क्या? कोविड बाकी जगह नहीं था, बाकी जगह औद्योगिक, बाकी महाराष्ट्र में कोविड ने सबसे ज्यादा मारा। यदि आंकड़े, सरकारी आंकड़े माने तो उत्तर प्रदेश में तो कोविड था ही नहीं। मुख्यमंत्री की बात माने तो कोविड पे तो विजय हासिल कर ली उन्होंने। गंगा में लाशें जो तैरी थी वो तो एक यहाँ का एक पद्धति है, वो लोग गंगा में समर्पित करते हैं, ऐसा उनका कहना था। बिहार से कुछ लाशें आई, कई बार गंगा उल्टी भी लाशें ले आती है, गंगा माँ है वो, 2 करे कम है, ऐसा भी हुआ है। तो आज सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन मुंबई से क्यों होता है? यदि मुंबई से ज्यादा टैक्स कलेक्शन है, इसका मतलब वहां बिजनेस चल रहा है, वहां मार्केट चल रहा है, वहां सारी इकोनॉमी लाइन पे आ रही है। और आप जीडीपी के, टोटल देश की जीडीपी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका खुद का जीडीपी कहाँ है ये देखिए आप। तो इससे लोग नाराज है।
इसलिए So, Congress does have wind behind it. Say Yogi's provided it some space in UP. More importantly, what Priyanka has been able to do there is having reverberating effects in Uttarakhand and other states, including Goa and the south. But most importantly, when you come up to December and the nationalistic and patriotic agenda, right? What you have is here. India's finest hour, 1971 liberation of Bangladesh, saw Indira Gandhi and military perfectly time the invasion. This is something that Congress should amplify. I know it has a problem in Punjab because of Indira Gandhi and what she did in the Golden Temple, but at the same time, one must forget Manmohan Singh has apologized for what happened in 1984, and secondly, there were a lot of Sikh generals involved in the creation of Bangladesh, especially Lieutenant General J.S. Arora, also Sardars, right? And Chidambaram is right when it says Congress TMC approach must converge, says PC. And in Punjab, they do have, there's a lot of problems in the Akali Dal. Aam Aadmi also is in trouble. Captain Saab, has he got a ballast from this laws withdrawal? Maybe some space, but having tied up with the BJP so openly and kind of being seen as gratuitous to them, I don't know how anybody who touches the BJP with the barge pole at this point in time, in my opinion, is going to sink. Caught off guard, back to drawing board for opposition for polls next year. This was the appointment of Chani. They really are. They're going to struggle, right? The opposition. Punjab Congress brings Jhakkar Bajwa to the fore. Congress brought change, took reins of power from elites. This is what Chani has been saying. Congress forms panels for elections in Punjab. And Sidhu is, on the other hand, a big problem for them, obviously, right? Sidhu is a big problem. Sidhu joins demo outside Kejriwal house, asks Delhi CM to walk his talk, which is important. Punjab cabinet skips AG resignation issue in meeting. Sidhu again attacks own government, this time on ex-DGP bail. Never seen such chaos. Tiwari on Punjab crisis. I think this guy may be trying to, Manish Tiwari may be trying to flip to Captain Saab's side. Sidhu turns down last chance, attacks government. Chani reacts by halting replacement of AG. He's spreading misinformation, says Punjab AG under Sidhu fire. Sidhu blocking government functioning, spreading false info Punjab AG. Congress leaders raise questions as Sidhu undermines Chani. Congress asks Captain's wife to explain anti-party act. Congress convinced Captain trying to wean away Hindu voters. And he probably is. That's all he's got at this stage. With the Jat voter is probably not going to go for him because the farmer ain't going to forgive. Cheers. खासतौर से उत्तर प्रदेश की चुनाव की प्रक्रिया है अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई हैं जहां मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पैकेजिंग कोई खास असर डालने वाली है। और चुनाव से ठीक पहले जो राष्ट्र के नाम लाखों करोड़ों अरबों की योजनाएं समर्पित की जाती हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं और उसमें मोदी जी का भी चेहरा होता है और योगी जी का चेहरा भी होता है, मुझे लगता है सिर्फ सीधे सीधे पैसे की बर्बादी है। एक वोट भारतीय जनता पार्टी का इससे बढ़ने वाला नहीं है, एक वोट इससे बढ़ने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा चुनाव हार जाएगी। अगर भाजपा को चुनाव जीतना होगा तो इन विज्ञापनों की वजह से नहीं जीतेगी, वो किसी और वजह से जीतेगी। मेरा मानना यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितना भी मतदाता है, चाहे वो भाजपा विरोधी मतदाता हो, भाजपा समर्थक मतदाता हो और दोनों के बीच में खड़ा हुआ मतदाता हो जिसने अभी तक निर्णय नहीं ले पाया है, वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.25 साल की सरकार के कामकाज का आकलन कर रहे हैं। अब जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का मामला उठा दिया, तो आज टीवी पे लगातार खबरें चल रही हैं, तो उससे एक नई कयासबाजी होनी शुरू हुई है। क्योंकि सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, कमजोर भी नहीं दिख रहा है। ये भी नहीं लग रहा है कि 2017 ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पार्टी 41% वोटों की और 315 सीटों वाली पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के समर्थक पत्रकारों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा ने अभी असली खेल तो शुरू ही नहीं किया है। जी। So AAP, the big challenger, also seems to be in all kinds of trouble in Punjab. In Punjab twist, AAP chief praises Sidhu, Kong stifling him. BJP accused of poaching AAP Punjab MPs and MLAs. Kejriwal silent on AAP CM face of Punjab praises Sidhu for taking on Chennai. Was offered money, cabinet berths to join BJP Bhagwant Mann. After defections, AAP presses panic button, names 10 MLAs in first Punjab poll list. Punjab caught in dirty fight for power, says Kejriwal. Now, Mamta has jumped into, I guess she tied up with Jai Jawan Jai Kisan. She should have actually tied up with Captain Saab. Captain Saab should have done too. Captain quits Congress, floats Punjab. Lok Congress will form a new party. Easy to clear name and symbol, says Captain. Punjab tie-up nearly finalized. Captain set to meet Nada on Saturday. Will form next government in Punjab with BJP. Look at him kowtowing to Khattar, who he had taken on together. Maybe, and is it because of this? Is a point to know. Disgusted with Punjab Congress leaders, won't come to India. Arusa. Is this all because of this? Captain to meet Shah today to discuss farmers' agitation. You know the outcome, but he's not going to get credit for that. Kartarpur corridor to open for pilgrims within days. That also he's not going to get credit for.
In talks with captain and ex-SAD Neta for Punjab Alliance says Shah. This is after Sirsa left, but that's another lightweight. Congress doing drama over welfare promises, says captain. Well, that's all he's got. It's going to be a difficult time for Captain Saab. He's well liked, but it's going to be difficult for him. Let's see what happens, folks. Jai Hind.